Hari Om everyone, good morning. Sit with your back and neck straight. Visualize the Divine Mother Goddess, Ma Durga, in all her glory. Let's take a deep breath in and chant Om 3 times. Om. Om. Continue to keep your eyes closed. Let's call out for the Divine Mother 11 times with Ma chanting. Ma. 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 Invite the Divine Mother to come into your heart and settle there until a sadhana is done. Let's make a resolve. Let's rub our palms. Place the warmth on our eyes. Spread the warmth across. We'll start our pranayamas. Om Shri Gurubhyo Namah. Let's start with Kapalbhati. Let's do 3 rounds. The first round will start with 30 to 50. If you have high BP, please go on a lower number. And after that, we'll do Agnisar. Right after you're done with the first round of Kapalbhati, we'll do the Agnisar. You can keep your hand in Apan Mudra, back and neck straight. Let's start with forceful exhalation.
When you're done, we'll do Agnisar in Bahai Kumbhak. Your stomach sucked in, movement of your stomach in and out. Let's do the second round of Kapalbhati, 50 to 100 rounds. Do as much as you're comfortable with. After you're done, let's do Agnisar. After you're done, let's do Agnisar. Let's start with the third round of Kapalbhati. Let's do the maximum that we can, 50 to 100 or beyond. Let's do a last round of Agnisar. Let's do the best that we can this time.
When you're done, just observe yourself for a few seconds. Your spine erect. Let's start with Ujjayi Pranayam. Let's take the breath all the way from Muladhara to your Sahasrara and back. Soham sound. Meditate on the Soham sound that you're creating. Let's start. Last few breaths. Let's do the retention in Antar Kumbhak and Bahai Kumbhak. Antar Kumbhak when you come to your Sahasrara, Bahai Kumbhak when you come to your Muladhara. Let's move on to Mahamudra. Same Ujjayi breath. Breathe in all the way from Muladhara to your Vishuddhi. Kechari Mudra. Tilt your head up. Akashi Mudra. Shambhavi Mudra. Hold your breath there. And then once you're done, come back to Muladhara and start the practice again. Try to engage your Muladhara and Udyan Bandh as well.
complete this practice, we'll be moving on to Mahabandha. Tribandha, the three logs, Moola Bandha, Udyayan Bandha, and Jalandhar Bandha. With complete exhalation, Bahai Kumbhak. 2, 3 rounds of these. Once you're done, we'll move on to Mahabhed. Combine the last two practices, Mahabandha and Mahamudra. Let's do 3 rounds of the Mahabhed. Once you're done, take a few seconds for yourself. Let's invite the Divine Mother. Let's call out to her again for 11 times.
Ma 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 Let's move on to the Nyas. Rishinyati Nyas. Use your entire hand on the head. Brahma, Vishnu, Rudra, Rishipyo Namaha Shirse. Mouth. Gayatrush, Nignashtup, Chandratyo Namaha Mukhe. Heart. Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati, Devatyabhyo Namaha Hridi. Your genitals. Aim Bijaya Namaha Guhe. Feet. Hrim Shakte Namaha Padayo. Navel. Klim Kalikaye Namaha Napyu. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Karnyanyas. The thumb and index, both your hands. Om Aim Angushthyabhyam Namaha. Same posture. Om Hrim Tranityam Namaha. Thumb and middle finger. Om Klim Madhyamabhyam Namaha. Thumb and ring finger. Om Chamundai Anamikabhyam Namaha. Thumb and the little one. Om Viche Kanishtayam Namaha. Rub your palms. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche Karatalakarakara Prishtam Namaha. Hridayanyas. Heart on hand. Om Aim Hridayaya Namaha. Head. Om Hrim Shirase Swaha. Curve of the head. Om Klim Shikai Vashat. Hand crossed over your shoulder. Om Chamundai Kavachai Ham. 3 fingers on either eye and your third eye. Om Viche Netraya Vashat. Snap your fingers around and then do that. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche Ashtreya Pat. Aksharanabhyas. With first 2 fingers. Head on the head, hand on the head. Om Aim Namaha Shikayam. Right eye. Om Hrim Namaya Dakshinetre. Left eye. Om Klim Namah Vamanetre. Right ear. Om Cham Namah Dakshinakarne. Left ear. Om Mam Namah Vamakarne.
right nostril. Om Dam Namah Dakshina Nasapute, left nostril. Om Yam Namah Vamanasapate, mouth. Om Vim Namah Mukhe, your genitals. Om Chem Namah Guhye. Let's do for the direction, the Ganyash. Start with east. Om, snap your fingers. Om Aim Prachai Namaha. Southeast. Om Aim Agnyai Namaha. South. Om Hrim Dakshinai Namaha. Southwest. Om Hrim Naivritye Namaha. Om West. Om Klim Prilche Namaha. Northwest. Om Klim Vayvye Namaha. North. Om Chamundai Viche Om Chamundai Udiche Namaha. Northeast. Om Chamundai Aishanye Namaha. Above. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche Urdhvaya Namaha. Down to Mother Earth. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche Bhumye Namaha. Let's move on to Anulom Vilom Pranayam. We'll start the Navarna mantra. So 1:4:2. Inhale for 1 mantra, hold for 4 mantras, exhale for 2 mantras. If you do not have the capacity to hold for 4 mantras, you can do 1:1:1 or 1:2:1 or 1:2:2. Whatever you're comfortable with. The best is 1:4:2. Start with your left nostril. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. 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 Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche.
Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Complete your practice. Pratik ji, shall we move on with the Kavacham? Somebody is going to be chanting today. Yes, Surbhi is there with us, and I would request Surbhi to kindly take the session ahead with Devya Kavacham. थैंक यू प्रतीक जी। प्रणाम गुरु जी, हरिओम सभी को। अगर कहीं कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। लेट्स स्टार्ट विद कॉलिंग माँ 3 टाइम्स। माँ, 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 अथ दिव्या कवचम्। ॐ अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टपछन्दः चामुण्डा देवता अगन्या सूक्तमातरो बीजं दिग्बन्धदेवतास्तवतं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठकत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमः चण्डिकाय। मार्कण्डेय उवाच। ॐ यद्गहं परं लोके सर्वशाकरं नृणां यन्न कस्यचिदागत्यां तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच। अस्ति गुह्यतं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शीलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचम स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उत्यानेतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना। अग्निनादयमानस्तु शत्रुमध्यगतो रणे विषमे दुर्गमेव चेव भर्याताः शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चित् शुभं रणसङ्कटे
नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि येस्तु भक्ताया स्मृता नूनं तेषां वृत्तिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् संशया प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रिगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाग्या नानारत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढा देव्याः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शाङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां दहनाशाय भक्तानां वहाय च धारयन्त्यायुधानित्यं देवानां च हिताय वै नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्ष्य शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे अवतु वाराही नेत्रत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पातु कौमारी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वब्रह्माणि मे रक्षेत् धस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्ष्य चामुण्डा शववाहना जया मे जाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमा मूर्धनि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भूर्वो रक्षेत यशस्विनी त्रिनेत्रा च भूर्वो मध्य यं घण्टा च नासिके शङ्खनि चक्षुषो मध्य श्रोत्रयो द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिक्यां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जीवायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां
चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुधरे नीलग्रीवा बहिकण्ठे नलिकां नलकूबरी स्कन्ध्यो खड्गनी रक्षेत् बाहू मे व्रजधारिणी हस्त्यो दण्डनी रक्षेत् अम्बिका चाङ्गुलीषु च नखाचूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षो रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदयललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं शबरी तथा पूतना कामिका मेळं गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्ष जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्गे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयो नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादाङ्गुलीषु श्री रक्षेत् पादाधस्तलवासिनी नखान् दंष्ट्राकराली च केशां शचेवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसा मांसा अन्यस्थितमेधासि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणि स्थिता ज्वालामुखी नखज्वालां भेदा सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षन् मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा ध्यानमुदानं च समानकं व्रजहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजसतमश्चेव रक्षे नारायणी सदा आयुरक्षतु वाराही धर्म रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्ति च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्षे चण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मी भार्या रक्षतु भैरवी पन्थानं सुपदा रक्षेन्मार्ग क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यत् स्थानं वर्जितं कवचेन तु
तत्सर्वरक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पद्मेकं न गच्छेतु यदिच्छेच्छुभमात्मनः कवचेनावृत्यो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रात्र लाभश्च विजय सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वरमतुलं प्रापस्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मृत्युः सङ्ग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्या कवचं देवानामपि दुर्लभम् यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यां श्रद्धयान्वितः देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः जीवेत् वर्षतं साग्रमपमृत्यो विवर्जिता नश्यन्ति व्याधय सर्वे लूटा विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गम चैव कृत्रिमं चापि यदिश्यम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलचाश चोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षराघोरा डाकिनीश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाच यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मा राक्षसवेतालाः कुष्माण्डाभैरवादयाः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचिर्हृदि संस्थिते मनोनति भवेद् राज्ञस्तेजोवर्धिकं परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावभूमण्डलं धते सशैलवनकाननम् तावतिष्ठति मेदिन्यां सन्तति पुत्रपौत्रिके देहान्ते परं स्थानं यत् सूर्यैरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमरूपं शिवेन सह मोदते ॐ इति देव्याः कवचं संपूर्णम्। माँ को 3 बार पुकारेंगे। माँ 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 अर्थार्धगलास्तोत्रम् ओमस्य श्री अर्गलास्तोत्रं मन्त्रस्य विष्णुऋषिः अनुष्टपछन्दः श्रीमहालक्ष्मी देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यते सप्तशती पाठकृत्वेन जपे विनियोगः
ॐ नमश्चण्डिकाय। मार्कण्डेय उवाच। ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतात्रिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोऽस्तु ते। मतु कैटभ विद्रा विविध्रात वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। महिषासुरनिर्नाशी भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। रक्तबीजवदे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। शुम्भस्यैव निशुम्भस्य दुर्माशस्य च मर्दिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। वन्दिताग्निघ्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। अचित्यन्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। न तेभ्यः सर्वदा भक्तया चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वः त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। चण्डिके सततं ये त्वामुच्चरन्तिह भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। विदेहि दिशतां नाशं विदेहि बलमुच्चकेह रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। विदेहि देवी कल्याणं विदेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। सुरासुरशिरो रत्न निघ्रष्टचरणे अम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। प्रचण्डदैत्यदर्पघ्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि कृष्णेन संस्ते तु देवी शश्वद्भक्ताया सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि इन्द्राणि पतिसभद्राव पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवी प्रचंड दोदंड दैत्य पर्द विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवी भक्त जनों दाद मत तानंतोदयाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि पत्नीं मनोरमां देहि मनोव्रतानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलदोभद्रापाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठे नरः स तु सप्तशती संख्या परमाप्नोति संपदाम् ओम इति देव्या। अगला सूत्रम संपूर्ण। माँ को 3 बार पुकारेंगे। माँ माँ माँ। अथ कीलकम्। ओमस्य कीलकं मन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टप छन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठकृत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकाय। मार्कण्डेय उवाच। ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे त्रेह प्रापनीतिनिमित्ताय नमः सोमार्थधारिणी सर्वमेतद्बीजानि यानि मन्त्राणामभिकीलकम् सोऽपि क्षेमवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्त्युच्चाटानादीनि वस्तूनि सकलानयपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जापेन सिद्ध्यत सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशकामि मां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभं स्तोत्रं वेव चण्डिकायस्तु तच्च गुप्तं चकार सः समापृत्रन च पुण्यस्य तां यथावनिं यन्त्राणाम् सोऽपि क्षेमवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां
वा समाहिता ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथेषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलां विद्यायेनां नित्यं जपति संस्फुटम् सः सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्यटतस्य तस्य भयं क्वापीह जायते नापमृत्यो वशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वेत न कुर्वणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभयते बुद्धेः सौभाग्यादि च यत्किञ्चिद् दृश्यते ललनाजने तत्सर्व तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम् शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरच्यकेह भवत्येव समग्रापिता प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्ययत् प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयेते सा न किं जनेह ॐ इति देव्याः कीलकस्तोत्रं सम्पूर्णम्। माँ को 3 बार पुकारेंगे। माँ 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 बहुत बहुत धन्यवाद सुरभि जी, आपने बड़े ही प्रेम से हमें आज पाठ कराया, उसके लिए आपका बहुत बहुत कृतार्थ है। और धन्यवाद गोपिका जी, प्राणायाम और न्यास बड़े ही आनंद से हमने किया, तो आप सभी का धन्यवाद। इसी के साथ मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे जितने भी इसमें पार्टिसिपेंट्स है कार्यक्रम में, अगर आप में से भी कोई पाठ करवाना चाहे आने वाले दिनों में, या फिर कोई प्राणायाम करवाना चाहे, न्यास करवाना चाहे, या नवारण मंत्र करवाना चाहे, तो कृपया आप अपना सहभागिता मेरे को प्रस्तुत कीजिए। हम व्हाट्सएप पे जुड़ते हैं और आने वाले दिनों में सब साथ में मिलके एक एक करके और पाठ करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। आज का कार्यक्रम हमारा हर रविवार संडेज विद योगी राज एक कार्यक्रम होता है जो 7 बजे होता है। तो इसी सेशन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और जो संडेज विद योगी राज के ऑडियंस है, जो पार्टिसिपेंट्स है, वो भी इसी में हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। तो मैं गुरुजी से अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम को यहाँ से आगे ले चले और हमें और ज्ञान प्रदान करिए गुरुजी। धन्यवाद। धन्यवाद प्रतीक, धन्यवाद गोपिका, धन्यवाद सुरभि। You all did very good, very nice, and very sweet sound of Surbhi. Very nice. And we should pray Goddess, our mother, our universal mother, with that peaceful mind, peaceful heart, loving heart, and devoted heart. That is very important. Rest of the things can be all managed, but the main thing is the devotion, your surrender towards the mother.
तो आप लोगों का बहुत धन्यवाद है. जस्ट वन करेक्शन आई वांट टू डू हियर. In books, it is written as iti in every end of the stotram. If you go through the end of the stotram, we normally see when we finish iti divya kavacham sampurnam, or if you read Argala, then iti divya Argala stotram sampurnam. But when we chant, we not recite this. Okay, we never recite the last iti word when we chant. It is written in a book, because in a book it is important to write now it is completed, samaptam. But when we chant, we not chant this line. Iti word is not good in chanting. We not say now finish. We never say it is finished, because we need always the kavach. We need always the argala. We need always the kilak. So we never say that's the end. So we should not chant the word end samaptam. So I request Surbhi to, and other all people who chant in the future, they should not chant the word samaptam or iti. Rest of the things is in some books are a little bit different. Some up and downs are there in sloka. It doesn't matter. It's okay. So don't worry about that. Even if you change your tone or raga, it's okay. Everything is okay if you are doing with the proper devotion. If you do with the full devotion, it's all okay. And I'm really glad to listen Surbhi so nicely chanted, and I am really thankful to Surbhi. Now we start the session today.